Alright, good morning students. Today we are continuing with Geography Chapter 9 Part 3 Tourism, Transport and Communication. Our objective for today is students will be able to take notes on how communication technology developed in Brazil and India and answer questions on the same. Today we're going to take notes on how the technology, कौन सा टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी एक दूसरे से लोगों कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कौन कौन से चीज़ें यूज़ करते हैं वो लोग, वो कैसे डेवलप हुआ, जल्दी डेवलप हुआ कि बहुत लेट डेवलप हुआ. All of this that happened in Brazil and India in terms of communication technology is what we're going to take notes on today, and we're going to answer questions on the same. We are answering questions on the same. All right. Now, so what are we learning today? Today we're learning about communication in Brazil and communication in India. All right. Now, students, keep your pens and notebooks ready. Before we go to communication in Brazil and communication in India, we're going to do a little bit of revision. All right. We're going to do a little bit of revision of some topics we learned in the 9th standard. All right. So be ready for that. Now, communication को जानने से पहले first we need to understand how time works. Remember, communication, what it does, it connects two people in different places in different time zones. All right. If I want to talk to my friend in America, then दोस्त इन अमेरिका का टाइमिंग अलग होगा, मेरा टाइमिंग अलग होगा. सो दिस इज वाई कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर उसका टाइम अलग है, मेरा टाइम अलग है, देन आई नीड टू यूज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी एफिशिएंट. ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट्स लुक एट द टाइमिंग बिट. Let's look at the timing in Brazil. Alright, now Brazil has a vast physiographic extent. Alright, ब्राज़ील बहुत वाइड है. फिजियोग्राफिक एक्सटेंट यानी वी मोस्टली कंसिडर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी लॉन्जिट्यूड यानी जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं. ऑलराइट, उनके बारे में उसमें ब्राज़ील इज वेरी वेरी वास्ट. ऑलराइट, इट पासिस थ्रू 1 2 3 4 लॉन्जिट्यूड. ऑलराइट, 4 डिफरेंट लॉन्जिट्यूड से ब्राज़ील पास होती है. ऑलराइट, नाउ the difference in time between the easternmost and the westernmost point is 168 minutes. Now you can see in this picture Porto de Ciesas, Porto de Ciesas and Nascenta do Rio Moa. Nascenta do Rio Moa. These are the 2 points. Porto de Ciesas is the easternmost point, and Nascenta do Rio Moa is the westernmost point. And these 2 points के बीच में difference क्या है time? It is 168 minutes. तो मतलब अगर पोर्तो दे सीएसआस में, सो दैट इज अराउंड 2 hours and 48 minutes, मतलब लगभग 3 घंटे है. तो मतलब अगर पोर्तो दे सीएसआस में अगर 5 बज रहे होंगे, देन नसेंता दे रियो मॉस में इट विल बी अराउंड 2 o'clock. ऑलराइट, दैट्स द डिफरेंस. ऑलराइट, सो there are different time zones in the country in relation to GMT. alright, बहुत अलग अलग टाइम जोन्स है. पोर्तो दे सीएसएस के साइड में एक टाइम जोन है, 3 hours GMT का दूसरा टाइम जोन है, 4 hours GMT का तीसरा टाइम जोन है, 5 hours GMT का चौथा टाइम जोन है. The time in Brazil is either 2, 3, 4 or 5 hours behind the GMT. GMT क्या है? Again, just reminding all of you, Greenwich Mean Time. Alright, remember, or Greenwich Meridian Time. Greenwich Meridian, we all know that is the 0 degree लॉन्जिट्यूड फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट मेजरिंग टाइम. तो ब्राजील के अलग अलग जगह या तो 2 घंटे पीछे, या तो 3 घंटे पीछे, या तो 4 घंटे पीछे, या तो 5 घंटे पीछे जीएमटी से. ऑलराइट, एंड द जीएमटी 3 लाइन इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ब्राजील. ऑलराइट, ब्राजील का स्टैंडर्ड टाइम किसे माना जाता है? द 3 hour वाला लाइन. ऑलराइट, द जीएमटी 3 लाइन इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ब्राजील. इट इज नोन एज बीआरटी. ऑलराइट, ब्राजीलियन टाइम, एंड बीआरटी इज 3 hours behind the GMT. एज आई सेड बिफोर, जीएमटी 3 लाइन यानी 3 घंटे पीछे है जीएमटी से. सो बीआरटी का जो टाइम है, यानी ब्राजील का जो स्टैंडर्ड टाइम है, यानी जो एक टाइम है, वो 3 घंटे पीछे है जीएमटी से. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइमिंग इन ब्राजील. नाउ लेट्स लुक एट कम्युनिकेशन. व्हाई इज कम्युनिकेशन सो इंपॉर्टेंट इन सच अ वास्ट लॉन्जिट्यूडनल स्पेस? नाउ कम्युनिकेशन इन ब्राजील. Brazil has a well developed communication system. We all know that Brazil is a highly developing country. तो वहाँ का हर कोई इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप हो रहा है. इट्स इंडस्ट्री इंक्लूड्स लैंडलाइंस, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट. नाउ फॉर ऑल दोज ऑफ यू डोंट नो व्हाट लैंडलाइंस इज, यू कैन लुक एट द पिक्चर्स ओवर देयर. ऑलराइट, घर में हमारे पास फोन होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, फैक्स मशीन होते हैं, ये सारी चीजें होती है. ऑलराइट, नाउ once you have these things, they are mostly connected to wires. These wires are then connected to network वाले wires बाहर, and they move on the land. alright, जमीन पे गड़े हुए या फिर ये पावर पोल्स के थ्रू जो वायर जाते हैं, this help you to
transfer one signal, one person's voice signal or one person's command from one place to another. Alright, so these are landlines. Then there is mobile phone. Mobile phone मतलब जो बिना वायर के चलते हैं. Television similarly, this works on wires. Computers mostly works on wires. Internet mostly works on wires. Alright. Now the telecommunications infrastructure is very developed in the central and south region. Infrastructure का मतलब क्या है? The technology or the different kind of machines. Alright. तो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो स्ट्रक्चर है अलग अलग चीज़ों का कि वायर्स है, राउटर्स है, मशीन्स है, ये सारे बहुत डेवलप्ड है सेंट्रल एंड साउथ रीजन में. ब्राज़ील के सेंटर और साउथ के रीजन में बहुत सारा डेवलपमेंट है इस इंडस्ट्री में, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में. लेकिन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इट इज़ नॉट वेल डेवलप. हाउएवर इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इट्स नॉट वेरी डेवलप. ऑब्वियसली वहाँ पे अमेजोन जंगल है. नॉर्थ वेस्ट की तरफ वी मूव टूवर्ड्स लिटिल बिट टूवर्ड्स पेरू. देयर इज अ लॉट ऑफ जंगल्स आउट देयर एंड वहाँ पे मतलब वायरों का पहुँचना, लैंड में वायर डालना, वहाँ पे ऐसे मशीनों को लाना बहुत मुश्किल है. ऑलराइट, सो इट्स नॉट सो डेवलप्ड इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट रीजन. नाउ large amounts of inaccessible areas make the development of communication in Brazil difficult. As I said right now, Amazon का जंगल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. ब्राज़ील में ऐसे बहुत सारे जगह जहाँ पे a lot of land is inaccessible. Inaccessible का मतलब क्या है? उस लैंड पे कोई जा ही नहीं सकता या फिर वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है. Inaccessible का मतलब to like something that cannot be easily visited. Alright, so because of these large amount of lands which cannot be easily visited, development of communication in Brazil is very difficult. Most of the people live towards the east, southeast के साइड में, so वहाँ पे communication अच्छा develop हो रहा है. लेकिन when you move towards the north, northwest, then those inaccessible areas के उन inaccessible areas की वजह से, because of those areas that cannot be visited, the development of communication is stopping. However, Brazil is also planning to use domestic space satellites to resolve this issue. लेकिन इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम लोग वायर नहीं डाल सकते, अगर हम लोग वहाँ पे मशीनें नहीं लगा सकते, then how will we establish communication there? Using satellites. Satellites सिर्फ सिग्नल भेजती है फोन्स के थ्रू एंड मोबाइल फोन्स आर मोस्टली वायरलेस. ऑलराइट, सो अगर सैटेलाइट्स ब्राज़ील के डेवलप हो गए, डोमेस्टिक सैटेलाइट्स यानी कंट्री के ऊपर वाले जितने भी सैटेलाइट्स है सिग्नल वाले जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाते हैं, इफ दे डेवलप दैट देन दैट इश्यू कैन बी रिजॉल्व्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन इन Brazil. Students, you may now pause the video and take down the notes over here and over here as well. Alright, and then move on to the next topic. Now, once again, before we move to communication in India, let's talk about the size of India. Alright, India too has a large longitudinal extent. India का भी extent बहुत ही लंबा है. The difference in time between the easternmost and the westernmost point is 120 minutes. Alright, इंडिया के ईस्ट से वेस्ट तक का जितना भी डिस्टेंस है उसके बीच में कितना टाइम डिफरेंस है लॉन्जिट्यूडनी अगर कैलकुलेट करेंगे, इट्स अराउंड 120 मिनट्स और 2 आवर्स. राइट, द टाइम इन इंडिया इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ जीएमटी. ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से या ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा कंट्री कितना आगे है? 5 hours 30 minutes. राइट, the 82.5 degree east longitude is considered to measure the standard time of India. It is known as IST. एंड इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से मेजर होता है? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड से. यू कैन सी द पिंक लाइन ऑन द मैप, दैट इज द 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड एंड दिस लॉन्जिट्यूड passes through Allahabad. Alright, as all of you already know, this longitude passes through Allahabad and it is known as IST. IST क्यों? Because that is the considered to be the standard time of India. कि अगर इंडिया में अगर टाइम चेक करना है तो उस लाइन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं. Alright, now moving on, why is communication so important in India in such a vast place? The telecommunication industry is one of the fastest growing industries in India. India में you already know it and I don't have to say this to you because you see it everywhere around you. Telecommunication का जो industry is one of the fastest growing industry in India. Alright, हर जगह तुम्हें नेटवर्क टावर्स बनते हुए नजर आते हैं, अलग अलग फोन्स के दुकानें नजर आती है, अलग अलग फोन्स नजर आते हैं. Alright, so you can understand कि हर घर में फोन, रेडियो, टेलीविजन, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है. Alright, whether you're rich, poor doesn't matter. It's mostly developing really quickly. All right, and India is one of the largest markets for smartphones in the world, especially for smartphones. इंडिया में बहुत तरह के फोन्स आ चुके हैं. यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर ओवर देयर इज अ कंपैरिजन कि इंडिया में पहले कैसे फोन्स थे और अभी कैसे फोन्स है. ऑलराइट, सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट्स इन द वर्ल्ड. बहुत सारे अलग अलग कंपनी इंडिया में आके स्मार्टफोन बेचना शुरू कर दिया है एंड इंडिया herself is making a lot of smartphones
from local companies. All right. Internet and satellites are being continuously developed in the country. Internet services बहुत ज़्यादा develop हो रहे हैं. People are using a lot of Facebook, Instagram. A lot of these internet services are being used. And satellites. We all have learned in the ninth standard about the various satellites that India has launched for communication. All right. And one such satellite is GSAT-11. All right. India's heaviest communication satellite. The picture is given down below. It is the largest satellite India has ever launched until date. And India also uses landlines, radios and televisions for communication. And India में बाकी स्मार्टफोन्स को छोड़ के भी बहुत सारे अलग अलग वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि लैंडलाइंस है, रेडियोज है, टेलीविजन है, राइट. एंड all of this forms the communication in India. Now when you think about communication, students, ब्राज़ील में हो या इंडिया में हो, इतने दूर दूर से कम्युनिकेट करने के लिए यू नीड सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर इज फोन, लैंडलाइन, टीवी, radio, etc. And now most of the world is moving towards satellite communication because that is our next top solution for the future. Alright, क्योंकि satellite communication first of all removes the needs for wires, तो बहुत सारे resources बच जाते हैं. Secondly, it is a little more reliable क्योंकि it is quick, it is very very fast. एक सिग्नल को जैसे पकड़ते हैं उसी सिग्नल को झट से दूसरे जगह पे पहुंचा सकती है. Alright, and finally, with the introduction of satellite communication and internet and all these other services, a lot of people, whether you're rich, poor, it doesn't matter which caste, class or level of society you are from, what it does is it creates an equal playing ground. Everyone gets an equal opportunity, and that's the reason why India is developing so fast. क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास फोन है, इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, इन सब चीज़ों की वजह से डेवलपमेंट उनका बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड मोर क्विकली, पीपल आर लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू डिफरेंट स्किल्स लाइक कोडिंग, पीपल आर लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू डिफरेंट थिंग्स लाइक अबाउट द न्यूज़, अबाउट पॉलिटिक्स, and they are getting educated. And this is why communication is important in places like India and Brazil, क्योंकि उनको डेवलप होने के लिए everybody needs to be educated. All right, and what helps in education? Spreading education, communication. All right, with that we have reached the end of our lecture, students. These are the two questions I want you to answer for today. First is communication in Brazil and next is communication in India. All right, इन दोनों के बीच में तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, यानी ब्राज़ील में कम्युनिकेशन कैसा दिखता है, इंडिया में कम्युनिकेशन कैसा दिखता है. यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑन दैट. एंड फाइनली IST एंड BRT. IST और BRT में फ़र्क क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, वेयर वॉज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड, किधर से किधर पास होता है, कितना टाइम डिफरेंस है, ऑल ऑफ दैट कैन बी मेंशन्ड. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text message, you can send me a voice note, and I will answer your question. Have a nice day, all of you.